Hello students, Jai Hind, Vande Matram. Welcome back to the class of Ravi sir. The easiest and finest way to learn the concepts of mathematics from standard 9 to 12th. Students, in our today video lesson of standard 9th maths chapter 9, area of parallelogram and triangle, we are going to learn the basic things about quadrilateral, parallelogram and triangle. Right students, first of all we will know about the area of parallelogram. Area of parallelogram is a region covered by a parallelogram in two-dimensional plane, right? टू-डायमेंशनल प्लेन के अंदर पैरेललोग्राम के थ्रू जितना एरिया कवर्ड होता है इन द जियोमेट्री, अ पैरेललोग्राम इज़ टू-डायमेंशनल फिगर. जो पैरेललोग्राम होता है वो टू-डायमेंशनल फिगर है, मीन्स इसकी लेंथ और ब्रेथ होती है. इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मीन्स पैरेललोग्राम जो है वो व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट है. द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360. और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स को आप ऐड करोगे, द वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल द एंगल्स विल बी 360. अ पैरेललोग्राम हैज़ टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन. पैरेललोग्राम के अंदर टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस होते हैं, राइट. सिंस इट इज़ अ टू डायमेंशनल फिगर, ये टू डायमेंशनल फिगर है, इसलिए इट हैज़ एन एरिया एंड पैरीमीटर. सो पैरेललोग्राम का एरिया भी होता है और पैरीमीटर भी होता है, राइट स्टूडेंट. सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ अ रीजन बाउंडेड बाय द पैरेललोग्राम इन अ गिवन टू डायमेंशनल. सो टू डायमेंशन के अंदर पैरेललोग्राम के थ्रू जितना रीजन कवर होता है, दैट रीजन इज़ नोन एज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. टू रिकॉल, अगर हम रिपीट करते हैं, और पैरेललोग्राम इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है विच हैज़ फोर साइड्स. क्वाड्रिलेटरल है और इसके फोर साइड्स होते हैं एंड दियर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. मीन्स पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं. इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. और सेकेंडरी है जो चीज़ है इसके अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स की अगर लेंथ मेजर करोगे दैट विल बी इक्वल मेजर. सिंस रेक्टेंगल है पैरेललोग्राम हैव अ सिमिलर प्रॉपर्टी. मीन्स रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करते हैं विथ सेम मेजर, सो यू विल सी दैट जो वैल्यूज़ होगी, मीन्स जो मैग्नीट्यूड होगा एरिया का, दैट विल बी सेम. बिकॉज जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल से डिराइव्ड है. सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज अ डायग्राम ऑफ व्हाट पैरेललोग्राम. हियर इज इन रेड लाइन you can see that perpendicular and base, right. So here DP is a perpendicular and AP is what? Base. Okay student. So area of parallelogram having formula. To find the area of parallelogram, multiply the base of the perpendicular. हमको अगर पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है तो बेस को जो परपेंडिकुलर लेंथ मीन्स एल्टीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई करो. इट मीन्स हाइट. इट शुड बी नोटेड दैट बेस एंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर. और याद रखना है आपको, जो पैरेललोग्राम के अंदर बेस और हाइट होनी चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए. इन अनदर वेयर एज द लेटरल साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट परपेंडिकुलर टू द बेस. और जो उसकी लेटरल साइड होती है वो बेस पे परपेंडिकुलर कभी नहीं होती है. थस अ रेड लाइन इज़ ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द हाइट एंड बेस. ऑलरेडी हमने फिगर में देख लिए हैं. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ब्रेथ इनटू हाइट स्क्वायर यूनिट. बिकॉज यहाँ पे टू पैरामीटर्स हैं, ब्रेथ भी है और हाइट भी है. सो जो इसकी एरिया होगी, जो यूनिट होगा वो स्क्वायर यूनिट होगा. सो हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? आप पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड करोगे? द पैरेललोग्राम आर एरिया कैन बी कैलकुलेटेड. हम पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग बेस एंड हाइट, अगर आपको बेस और हाइट पता हो. अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा भी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैन आल्सो बी इवेल्युएटेड इफ़ इट इज़ टू डायगोनल्स आर नोन. अगर उसकी दो डायगोनल की लेंथ हमको पता हो पैरेललोग्राम के अंदर तो भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं पैरेललोग्राम का, राइट. or if the length of parallel sides
इज़ नोन, या फिर पैरेलल साइड्स की लेंथ पता हो पैरेललोग्राम में, तो भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अलॉन्ग विथ एनी ऑफ द एंगल बिटवीन टू साइड्स, और साथ में कोई भी एक एंगल हमको मालूम होना चाहिए। पैरेललोग्राम एरिया यूजिंग साइड, तो साइड का यूज़ करके पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करते हैं। सपोज ए एंड बी आर टू सेट ऑफ पैरेलल साइड्स, ए और बी जो पैरेलल सेट ऑफ साइड्स हैं, एंड पैरेललोग्राम एंड एच इज़ द हाइट, और जो एच है वो हाइट है, देन बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ द साइड्स एंड हाइट ऑफ इट द फॉर्मूला विल बी व्हाट, area of parallelogram is equal to base into height. So A is equal to B into H square unit. Let us see an example. If the base of parallelogram is equal to 5 cm and height is 3 cm, so then find the area. So given length of base 5 cm, height is 3 cm. So as per the formula, what is the formula to find out the area of parallelogram, student? Area of parallelogram breadth into height. What is base into height, not breadth into height, base into height, right? So base is 5 and height is 3, so answer will be 15 square centimeter. Okay student, is it clear how to find out the area of parallelogram using sides? Okay, now here has been the question. Find the area of parallelogram with base 4 centimeter and height of 5 centimeter, right? So from the questions we collect the data. What is base? Base is represented by B, this is 4 centimeter, height is 5 centimeter. We know that area of parallelogram, base into height is square unit. So students, here you can see that what is the base, 4 centimeter, and what is height, 5 centimeters. So 4 into 5, student, 20 square centimeter, because length are given in centimeter. So centimeter into centimeter, obviously centimeter square. In short, centimeter square can be written as square centimeter. So you can conclude that the area of parallelogram is equal to 20 centimeter. Understood students? Nothing you will have to do over here, just collect the data. In this question, base is given, height is given, just you will have to apply the formula and you can get the answer. Now the next topic is area of triangle. So students, in general, the term area is defined as the region occupied inside the boundary of flat object. So flat object के inside जो area, जो boundaries के inside जो स्पेस ऑक्यूपाइड होता है, दैट ऑक्यूपाइड स्पेस इज नोन एज एरिया ऑफ एनी फिगर. द मेजरमेंट इज डन स्क्वायर यूनिट विद द स्टैंडर्ड यूनिट बीइंग स्क्वायर मीटर, राइट? जनरली कोई भी शेप का एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं, जनरली हम मीटर स्क्वायर में इसको राइट करते हैं. फॉर एग्जांपल, टू कंप्यूट द एरिया देयर आर प्री डिफाइंड फार्मूला फॉर स्क्वायर्स. स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला है, ट्रायंगल का, एंड सो ऑन. सो हियर वी विल लर्न अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल. द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज डिफाइंड एज द टोटल रीजन दैट इज इनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर ट्रायंगल. सो 3 साइड्स के थ्रू जो रीजन कवर्ड है, दैट इज नोन एज एरिया ऑफ ट्रायंगल. बेसिकली it is equal to half of the base times height. So area is equal to 1/2 base into height. Hence, to find out the area of triangle, polygon, we have to know the base and height. It is applicable to types of triangle where it is scalene, isosceles or equilateral. Note that the base and height of the triangle are perpendicular to each other. आपको ये नोट करना होना चाहिए कि बेस और जो हाइट है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए. So you can find out the area of triangle. So students, here we having the triangle, right angle triangle, isosceles triangle. So area is 1/2 base into height. This is equilateral triangle, so area of equilateral triangle is
root 3 by 4 side square. What is root 3 by 4 side square? Using this formula you can find out the area of triangle. So let us see an example. What is the area of triangle with base 3 cm and height h is 4 cm? So applying the formula 1 by 2 base into height, so 1 by 2 4 into 3, so we are getting 6 cm square. Understood? The next one, to find the area of right angle triangle. A right angle triangle, also called right angle triangle, has one angle at 90 degree. राइट, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा एंड अदर एक्यूट एंगल्स सम शुड बी 90, और बाकी जो दो एक्यूट एंगल होंगे उनके एडिशन करोगे एंगल्स के, दैट विल बी 90 डिग्री. देयरफॉर द हाइट ऑफ ट्रायंगल विल बी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर साइड. राइट, जो इसकी हाइट होगी वो हम परपेंडिकुलर साइड कंसीडर करेंगे. सो द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विल बी 1/2 बेस इंटू हाइट. So base height is what, students? Perpendicular side. Understood? So by applying this formula we can find out area of right angle triangle. Is it clear, student? What is the area of right angle triangle? 1/2 base into height. Now area of equilateral triangle. An equilateral triangle is a triangle where all the sides are equal. इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारे साइड्स इक्वल होते हैं. द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द बेस डिवाइड द बेस इनटू 2 इक्वल पार्ट. अगर हम वर्टेक्स से, कोई भी एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बेस को जो परपेंडिकुलर होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा. टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वी कैन यूज़ द फॉर्मूला A is equal to root 3 by 4 side square. Right, student? And we can also use the formula A is equal to 1/2 base into height. Is it clear, student? What is the area of equilateral triangle? So area of equilateral triangle is A is equal to root 3 by 4 side square. Okay. So let us see few questions. Find the area of acute triangle which has base 13 inches and height is 5 inches. So we know the formula to find out area of triangle. A is equal to 1/2 base into height. 1/2 base is 13 centimeter and height is 5 centimeter. So by simplifying these things we are getting 1/2 65 inches square. So by 65 divided by 2 we are getting 32.5 inches square. Similarly, find the area of right angle triangle with the base 7 centimeter and height is 8 centimeter. Students, same way we can apply the formula. A is equal to 1/2 base into height. So base is 7 centimeter, height is 8 centimeter. So the area of triangle will be 1/2 into 56 centimeter square. So 56 divided by 2, 28 centimeter square. Is it clear, students? In this way we can find out the area of right angle triangle applying the formula 1/2 base into height. Okay, students, here we are completing today video lesson. I hope you have understood. For more video lesson, keep watching your channel Ravi Sir Ji Maths. Thank you once again, students, for watching this video till the end. Welcome you once again.